ನೋಡಿ, ಹಿಜಾಬಿನ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತು. Sir, is criticizing or terming judgment verdict by High Court and or Supreme Court is conflict of court? No. Our Constitution specifies that all of us are bound by the judgment of court. There is no dispute that we are all required to follow the judgment. But Constitution also provides a right to every citizen to criticize every judgment. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರದ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಗೃತಿ. Let's not purchase things and let's not travel in auto. Let's not buy meat from Muslim shops. And what's a message to these people? And Ramzan is approaching now because there's a lot of right of fear in the community. These type of forces are really anti-nationals. If at all the government has got any sense, if sedition is to be required to be used, first it is to be required to be used against such forces. If UPA is to be used, it is against such forces UPA is to be used. See, it is just now started. You have to study in entirety because there is nothing to do with some rules or nothing that. So it is a practice which was going on. Now serious objections have been raised regarding that. You look into that. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಗಂಡುಸ್ತನ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ತಡಿಲಾರದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ, ಆ ಪದ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ's peaceful situation is the beginning. हिंदू बांधव, आज पूरा भारत भर में हलाल प्रोडक्ट्स के विरुद्ध बाइकॉट अभियान, बहिष्कार अभियान चल रहा है. विशेष रूप से युगादि, हिंदुओं का नया वर्ष. इस समय बहुत सारे हिंदू के घर में नॉन वेज करने का एक प्रथा है. हम सभी हिंदुओं को, हिंदू समाज को आह्वान करते हैं, हम इस बार युगादि के नया वर्ष में, इस पर्व में हम कोई भी हलाल मीट, हलाल मांस को हम खरीदी ना करेंगे. हलाल मांस को, हलाल मीट को हम बहिष्कार करेंगे. After banning Muslims from setting up shops near temples in Karnataka, the Hindutva extremist groups here are now demanding a ban on halal meat. The extremist groups here are demanding Hindus to not buy halal meat from Muslim vendors. Here is the report. हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है. इसके लिए हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकाट करेंगे. जिस प्रकार हिंदू पद्धति के जो झटका मीट है उसका हम उपयोग करेंगे. देश विरोधी आर्थिक इकोनॉमी का हम बाइकाट करेंगे. देश का रक्षण करेंगे. Right-wing extremists are demanding Hindus to boycott halal meat for Hasatadaku, an integral part of the Ugadi festival which is observed a day after Ugadi. On this day, Hindus offer meat to their deities. The Hindutva organizations say that halal meat should not be offered to their deities. In some parts of the state, the right-wing extremists went out of their way, visiting small vendors to persuade them to not buy meat from Muslim butchers. सही है. जब आपने हलाल का नाम अगर जो होटल के ऊपर आपने लिखा रहता है हलाल क्या चीज़ है? हलाल थूकने का, जो अन्न के ऊपर थूकने का संस्कृति हिंदू धर्म नहीं है. अन्न परम ब्रह्मा बोलते हैं हिंदू धर्म में. जो हमने अन्न को परब्रह्मा बोलने जो एक महाप्रसाद है, उसको थूकने वाले का हलाल जो है उसको मान्यता हिंदू धर्म में नहीं है. इसलिए सही कहा है, हलाल को इस देश से हटाना चाहिए. हलाल है क्या कि ये ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के लिए उसको समर्पण कर देते हैं या अल्लाह के नाम पे उसको खैरात कर देते हैं. ये मतलब हलाल का नहीं है. हलाल का मतलब ये है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करते हैं जानवर को,
वो जानवर जिसके अंदर बहता हुआ खून हो, जैसे बकरियां हैं, मुर्ग है और बैल है, भैंस है, ऊंट है, तो इसको ज़बह करने और नहर करने का हुक्म दिया गया। इससे क्या होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो खून होता है, अगर वो अंदर ही बॉडी के अंदर रह जाए, फिर उसके बाद उसको खाया जाए, तो इससे मर्ज़ बढ़ जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। अगर ये खून बाहर आ जाए, अब बाज़ लोग कहते हैं कि मुंडी अलग हो, यानी सर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, एक ही उसको कट भी कहते हैं, तो ये नहीं है। इस्लाम कहता है कि उसको वहाँ भी रेस्पेक्ट करना है, इज़्ज़त देना है, तो ऐसा ज़बह करें कि उससे उसको तकलीफ़ ना हो। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी जानवर को ज़बह कर रहे हो तो एक और जानवर को सामने ना लाया जाए, ताकि उसके अंदर किसी तरह की परेशानी पैदा ना हो। जानवर का ख्याल रखने का नबी ने हुक्म दिया है। तो ये ज़बीहा है जो अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाता है, अल्लाह के लिए समर्पण नहीं किया जाता। तो ये गलत फहमियाँ भी बाज़ लोगों के अंदर पैदा हो गई कि जब अल्लाह के नाम पर दे दिया गया तो फिर ये खाने की क्या ज़रूरत है। ये अल्लाह के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे सिर्फ ज़बह किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसको खाने का हुक्म दिया गया कि जब पूरा खून बाहर आ गया, अब वो जैसे ही वो मुकम्मल हो तो पाक साफ़ करने के बाद उसके गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हलाल कहते हैं। अब ये हलाल को लेके अब मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना कि हलाल प्रोडक्ट्स है, इसको हटाया जाए, ये कुछ लोग हैं जो नफ़रत की आग फैलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल चंद लोग हैं। According to Congress, such organizations are working against the constitution and the state government is taking no action against them. They allege the BJP is fanning such issues as part of an election campaign for the upcoming Vidhan Sabha elections. Slamming such trends, former Chief Minister and JDS leader H.D. Kumaraswamy asked Hindu youths to not spoil the state. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜ ಒಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟವ್ರೆ. ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? Some ministers of the state's ruling party have also expressed support for the ban. BJP's General Secretary C.T. Ravi referred to halal meat as economic jihad. He said that the regulation of halal products has been designed in a way that products should only be purchased from Muslims and not others. ಆರ್ಥಿಕ ಜಿಹಾದ್. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಜಿಹಾದ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲಾಲನ್ನು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಹಾದ್ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? इकोनॉमिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद ही उसको कर लेने दो। इतने दिन ऐसे बोलते रहेंगे, बोलने दो, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। अब ये लोगों का मकसद ये है कि दिसंबर में या जनवरी मार्च में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके ताल्लुक से कितना कम्युनलिज्म फैलाना है वो पूरे इरादे के साथ फैला रहे हैं। इसके ताल्लुक से हम लोगों को भी बहुत होशियार से काम करना है, आगे क्या तरीके से हम लोग को आगे जाना है। One side Prime Minister says सबका साथ सबका विकास. Now his party General Secretary says minority का नाश सबका विकास. This is the dual policy of the BJP. What Modi says, what Ravi says, let Prime Minister should clarify for this. I leave it to them. As for halal cut, Jhatka cut, we are not bothered about it. Scientifically, you ask a veterinary doctor, if you cut animal like this, what is the benefit? If you cut like this, what is the benefit? Whichever the animal husbandry doctors gives the opinion, you accept it. Finish. Halal meat is the meat of animals slaughtered by a method called halal. There are two methods. One is a halal and another is a Jhatka method. In halal method, the animals are slaughtered by cutting the windpipe and the jugular vein. Here there will be profuse bleeding, and in Jhatka meat there will be no bleeding because the animal undergoes shock since the animal is slaughtered at once. Here in halal meat, the quality of the meat is good and it is one of the best method scientifically also. It is a free country. Does anyone have the pressure to buy the halal meat?
It's a free country. Anybody wants to buy, doesn't want to buy. It is their right. What do they want to suggest? I was hearing BJP leader telling that it is a economic jihad. I have come to assembly through people. Is it a legislature jihad? If a girl or a boy goes to college and school, is it educational jihad? What is that? They are filled with poison. They are poisoning this society. Nobody is compelled to buy anything. It is a free country. Anybody wants to buy halal meat, they will buy. Doesn't want to buy, doesn't buy. Who are they to tell anybody to buy or not buy, or force anybody to sell or not to sell? First the hijab controversy, then boycotting Muslim vendors from temple premises, and now the halal meat controversy. Concerned with the rapidly growing religious hatred, 61 progressive thinkers from the state, including K. Maralu Siddappa, Professor S.G. Siddaramaiah, Bulwar Muhammad Kunhi and Dr. Vijaya have written to Chief Minister Basavaraj Bommai with an appeal to check the religious hatred in the state. हर आदमी जो है अपने अपना इख्तियार रखता है कि वो कहाँ पर जाकर अपने खाने की चीज़ खरीदे। रहा ये जो लोग, जैसा आप बताए, कुछ नाम बताए कि ये लोग जो है दे आर स्पॉइलिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द पीसफुल कम्युनिटी विच रनिंग द मीट बिजनेस। मीट इंडस्ट्री के अंदर जो है, लोकल के अंदर जो है मुसलमान हैं जो काम कर रहे हैं, और बड़े तादाद के अंदर जो बल्क कंपनियों से जो माल जाता है, एक्सपोर्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो है नॉन मुस्लिम्स हैं। सो दे वांट द हलाल सर्टिफिकेट टू एक्सपोर्ट द मीट टू द वेस्टर्न कंट्रीज। दैट इज द वेरी बिग इशू। रहा हमारे लिए जो खाना है लोकल्स के अंदर, लोकल जो मीट सप्लाई होता है, इसके अंदर क्या है बोले तो हर एक को मालूम है कि मुसलमान के पास जो है ये हलाल मीट ही मिलता है। रहा अब जो नए नए जो झटके के दुकान खुल गए हैं, ये लोग अपना कारोबार को प्रमोट करने के लिए है, दे आर मेकिंग द लॉट ऑफ न्यूसेस थिंग दैट दे आर टेलिंग दैट इन द झटका मीट इज ए वेरी प्रोटीन एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर हर। इट इज वेरी बैडली अफेक्टेड एज सून एज पॉसिबल व्हेन दे नो। आप जो है उस गोश्त को रखकर थोड़ा धो कर उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हलाल मीट में क्या फ़र्क है और झटका मीट में क्या फ़र्क है। हर कौम का आदमी आता है इधर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, तेलुगु, ईसाई, सब आती है इसके अंदर। ये बिजनेस नहीं है, उसके ऐसी भी इसमें हिंदू मुसलमान की सब क्या भी नहीं। मुसलमान जब हिंदू के पास लेता, हिंदू मुसलमान के पास लेता, उसके सब क्या भी नहीं ना वैसा। देखो, जब भी हम मुसलमान लोग गोश्त बेचते हैं तो हलाल करते हैं, तो इस वजह से कोई किसी के पास आके आपको पूछा कि हलाल का गोश्त क्यों बेचते हैं, हमको हलाल गोश्त नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ था? नहीं, आज तक नहीं हुआ। हमें भी 3 साल से ही 40-50 साल से व्यापार कर रही है। मैं भी आज तक कोई आपको बगैर हलाल नहीं से गोश्त है क्या पूछा नहीं आज तक कोई भी। अब जितना भी बड़े सब होटल में देती हैं बगैर हलाल सर्टिफिकेट ले कुछ रखते। सुनो क्या स्लैटर होता हलाल सर्टिफिकेट होना, कोई आपको पूछता हमको होटल के अंदर खा को हलाल क्या को तो ना सर्टिफिकेट बताती हैं, हलाल सर्टिफिकेट है को। ऐसा आज तक कौन भी पूछा नहीं। हमने हलाल नहीं होना, वो दूसरा होना को। गोश्त की दुकान में गोश्त रहता, गोश्त लेके जाती हूँ। अब ऐसा देखो तो पूरा 5 स्टार होटल ही, सब गैर कौम के होटल ही, सब आदमी के साथ ताल्लुक़ात थी ना, बिजनेस ताल्लुक़ात थी ना सबके साथ। अब बकरा गैर कौम पलता, बाजार को जाती गैर बकरा लेकर आती, अब आटो में डालता गोश्त न गैर कौम रहता। अब हमें मुसलमान कहते तो गैर कौम पूछती क्या? नहीं पूछते ना उससे। आटो मिली, आटो में डालती, डाल लो गोश्त आती। उसके अंदर मुसलमान हिंदू वो सब क्या भी नहीं, सब बिजनेस ताल्लुक़ात रहती है आदमी के साथ, सब ताल्लुक़ात से बिजनेस चलता उसको। नहीं वो सब चुपके फसादत क्या करती उसके, फसादत चुपके क्या भी नहीं। बरसात से चल रहा है कारोबार है। अब हमें जाको हिंदू के पास बकरा नहीं लेते को, नहीं बोलता मुसलमान को बकरा नहीं बेचता को बोलता क्या? नहीं बोलता वैसा सभी। मुसलमान हिंदू के सब ताल्लुक़ात बिजनेस ताल्लुक़ात ही, उसमें बिजनेस चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर मैं मुसलमान के ने नहीं करना तो हिंदू के ने नहीं करना को तो क्या भी नहीं, पूरा है ना ख़त्म हो जाती चीज़ें। As heat builds up among political parties in the state, the opposition parties have alleged that such protests and demands are to only disturb the peace and harmony in the state. Meanwhile, Chief Minister Basavaraj Bommai has said that his government will look into the issue before taking a stand.